اب 20 منٹ کا وقفہ رہے گا ہمارے ساتھ. اوپن سیشن کے لیے ٹائم ہے. جو حضرات اب کوئی ڈاؤٹس یا کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں وہ اپنا ہاتھ رائز کریں اور انشاءاللہ ان کو انمیوٹ کیا جائے گا, وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ٹھیک ہے, آپ نے لاسٹ میں آرٹیکل امیج اور ایم ایس ورڈ میں بھیجنے کے لیے کہا, لیکن ہمارے پاس تو سسٹم ہی نہیں, تو ہم کیا کریں؟ ہلو, آواز آ رہی ہے؟ عبدالعالی صاحب جی, میرا سوال سنا آپ نے؟ جی سوال سنائی دیا. عبدالعالی صاحب جواب دیں گے آپ. جی جی جی. اگر آپ کے پاس ان پیج اور ورڈ اگر نہیں ہے تو آپ اس کے لیے ایک یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اسے ایک پیپر میں لکھ کر اس کو اسکین کر کے آپ ہم واٹس ایپ کے ذریعے ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ بچوں کے لیے بھی ویڈیو بنانا ضروری ہے, لیکن ہمارے گھر میں تو بچے نہیں, صرف میں اکیلا ہوں. تو اس وقت آپ کے لیے چھوٹ ہے کیا بہن؟ جی بھائی, بہت سے لوگ میسج باکس میں کوشچن پوچھ رہے تھے, اب موقع ہے, بتائیے. آپ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں, ہاتھ نہ اٹھائے تو بھی چلے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام, اپنا نام بتائیے. حیدر علی کوپل سے. بچوں کا تو ڈیٹیلز پوچھے تھے, ہمیں اس کو ڈالے تھے اس میں, بٹ الگ سے اس کو کیا پھر اس میں یہ کرنا پڑتا ہے کیا, مطلب ری جوائن کرانا پڑتا بچوں کو کیا, تبھی لنک کیا بھی ہے؟ دیکھیے, آپ کے جو بچے ہیں 5 سے 10 سال کے, نہیں اب 11 13 11 12 13 ان کا وقت ہو گیا. جی جی اچھا ٹھیک. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی, جو کیس اسٹڈی میں جو تحریر اور جو ویڈیو بنانے کا ہے, یا پھر صرف ایک تحریر ہی بنانا ہے یا پھر ویڈیو بنانا ہے, یا پھر اگر دونوں بھی اگر کوئی شیئر کرنا چاہے تو؟ اب ذرا گائیڈ بک پھر ایک بار پڑھ لیجیے, اس میں تفصیلات ہیں. دیکھیے جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کا آپ استفادہ کریں. وقت بچے گا ہمارا, وقت چونکہ بہت کم ہے. السلام علیکم, سید محمود تورنگل سے. جی, یہ ہفتے کے دن صبح 10 سے اب مغرب سے پہلے وہ 6 بجے تک بل پوچھے گئے, بولا گیا ہے کہ سبمٹ کرنے کے لیے اسائنمنٹ, اگر کچھ پہلے کرے تو اچھا رہتا, کہ ہم ڈیوٹی کو 8 بجے چلے گئے تو پھر آنے تک 6:30 7 بج جاتے. فجر کے بعد سے مغرب سے پہلے تک کرے تو اچھا رہے گا. ٹھیک ہے, اس پہ ہم بات کریں گے. جی جزاک اللہ. جی السلام علیکم, نوشاد دلی سے. یس, میں یہ معلوم کر رہا تھا, آپ نے ابھی ذکر کیا لینتھ کوشچن اور شارٹ کوشچن کے بارے میں, تو اس میں پیجز ہیں, کتنے پیجز ہیں اس کے بارے میں تھوڑا تھا اگر ہو جاتا, لینتھ کتنا لینتھ. آپ کو جو اسائنمنٹ دیے جائیں گے نا, تو اس میں انسٹرکشنز رہیں گے کہ کتنا لینتھ رہے گا. وہ بات کلیئر ہوئی؟ جی وعلیکم السلام. یہ پوچھنا تھا اسٹڈی کے بارے میں, آپ بتائیں سوالات بھی ہمیں کرنا ہے, اسٹڈی بھی کرنا ہے, آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی صاحب. آ رہی ہے؟ نہیں. یس مسٹر جعفر. Now you can ask. جی السلام علیکم, دس از نوشاد. سو میرا کوشچن یہ تھا کہ ٹیوزڈے کو کوشچنس آئیں گے اور فرائیڈے کو وی نیڈ ٹو گیو دا آنسرز, رائٹ؟
maybe I've missed. I think आपको गाइड बुक नहीं पढ़ी शायद. Not completely. ठीक है, पढ़ लीजिए, बेहतर होगा, क्योंकि जी. जो चीजें ऑलरेडी हम समझा दिए फिर उस पर हम बात करना, कोई वक्त का सही इस्तेमाल Yes. और दूसरा ये है कि सब कुछ वो पढ़ के ही आंसर करना है. Entire course is based on the reading, not on any video content or anything. No. You can make use of video contents too. For example, if you have a topic like Qurbani, sacrifice of Prophet Ibrahim, if you have any reliable video, you can watch that. No issues. Okay, but what we want is you should gather information through reading, reflection, contemplation, discussion with your parents or friends, and watching videos. Okay, so you don't get the information and write on your own. Okay. Jazakallah. So we have our friends from different parts of the world. They are trying to understand what we are actually speaking here. Now is the better time for them to ask. So let us provide this time for them. Mr. Jafar. Okay, I was asking you regarding the speech that you have made there. I didn't understand anything anyway. That was the question that I had. So I think maybe it's our time now to understand the whole context. I request you to go through the guidebook. Everything is there. Okay. Everything has been explained very clearly there. You go through that book. If you have any doubt, you can ask any time. All right. You can call us or you can WhatsApp your messages. Okay. All right. Okay. That was I was thinking maybe you have two parts. You have the Urdu side and you have the English side. Yeah. That's okay. Then it's okay. Alhamdulillah. Inshallah, on 5th of June, we will be having an exclusive session for the English-speaking persons. Inshallah. All right. Okay. So we'll announce the time. If you tell us your convenient time, we will arrange session for you. No problem, inshallah. You can message us later. Okay. MashaAllah. हेलो. Yes. जी बताइए. जी असाइनमेंट जो है वो हम जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के एडमिन हैं हम उनको भी सेंड कर सकते हैं ना? हाँ, असाइनमेंट सबमिशन की बहुत ही तफसीलात हैं, इंशाल्लाह वो आपको बताई जाएंगी. अभी आप फोकस कीजिए असाइनमेंट्स को समझने के लिए, और असाइनमेंट सबमिशन आपका सैटरडे को होगा, तो इंशाल्लाह उससे पहले आपको बता दिया जाएगा कैसे सबमिट करेंगे. तो उसके कुछ ग्रुप्स हम बनाएंगे इंशाल्लाह. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. हेलो. जी मेरा सवाल यह है कि अभी जो बोल रहे थे सब गाइड में है ना, मौजूद है ना, और क्या कुछ एक्स्ट्रा भी बोले थे क्या? कुछ लेट हो गया था, ताखिर होगी थी आने में. एक्स्ट्रा क्या बोले? कोर्स में जो एक्टिविटीज है उनका एक्सप्लेनेशन दिए गए. अच्छा जी. प्रोग्राम कॉपी नहीं देखे आप? नहीं, वही टाइम थोड़ी देरी हो गई तो मुश्किल हो गया. आपको जो भी मटेरियल दिया जाता है थोड़ा सा आप देखें, बहुत ही वाज़ेह गाइडलाइंस होती है. चलिए. हाँ जी, जज़ाकल्लाह. सलाम. मैं अफजल बॉम्बे से. मेरा सवाल ये था कि जो असाइनमेंट जो हफ्ते में देना है, बाई चांस कभी वो आगे पीछे हो गया, लेट हो गए, तो वो नेक्स्ट वीक दे सकते हैं क्या? उसी हफ्ते नहीं. आपको संडे असाइनमेंट दिया जाएगा, सैटरडे आपको सबमिट करना पड़ेगा. बस ये फिक्स टाइम है. एक वीक का एक असाइनमेंट है, फिर नेक्स्ट वीक का दूसरा असाइनमेंट है. ओके. जज़ाक. Apart from assignments, we have a question here. Apart from assignments, will we have a class on Tuesday? English or Urdu? See, on Tuesday we will be having an exclusive session for you, because we expect that after getting assignment you will read all those stuff
and prepare your own doubts, your own questions, your own views about that assignment. So with that stuff, we would like to interact with you on Tuesday. That's why we have proposed Tuesday for that particular online class. Sunday you will read that assignment, Monday and Tuesday. So Tuesday we'll be having online session. The time will be decided with your your consultation. We discuss with you in the WhatsApp group and decide the time. इंग्लिश और उर्दू की क्लास सेपरेट होगी क्या बल्कि भी पूछ रहे हैं. So we will try to have a bilingual kind of explanation. If you need any extra class exclusive in English or separate for English speaking persons, you just tell us, we will arrange, inshallah. What about as for online Assalamualaikum. as for online classes from the organizers are concerned, we will try to have a bilingual explanation because the audience is mixed. Apart from that, if you need any extra explanation or if you want to have a separate session for you, you just tell us, we'll arrange, inshallah. Be quick in communication. Yes. अस्सलामुअलैकुम. हुबली से हुसैन शेख. हाँ जी जी, मुताले के जो PDF अभी नहीं पहुंचा मेरे को. हन्नान साहब, मुताला करने के PDF नहीं पहुंचा. हाँ जी, हन्नान साहब सुन रहे हैं शायद. मैं आज इंशाल्लाह पूरे ग्रुप में भेजता हूँ पूरे बुक्स फिर से. शुक्रिया. अस्सलामुअलैकुम. हुबली से. Assalamualaikum. For the people who are in abroad, तो उनके लिए कुछ classes Friday, Saturday को है क्या? Because Tuesday all these are working here in Dubai and this thing. So any classes on Friday and Saturday? Actually, we are preferring Tuesday because that will help you to complete your assignments within the time. So you need to submit your assignment on Saturday. So if you take a class on Tuesday or earlier than Tuesday, it will be helpful for you. If you conduct on Friday or Thursday or Saturday, it doesn't make any difference. It will not be helpful for you. So it is for your convenience. As far your time pattern is concerned or your activities are concerned, just let us know your time schedule. We will think over it. Inshallah, our coordinators will think over it. Okay, noted, inshallah. Assalamualaikum warahmatullah. Walaikum salam warahmatullah. Assalamualaikum. Walaikum salam ji, boliye. My name is Rabi Usabo Ahmed from Nigeria. Okay, tell me. My question is that during the session, is there any PDF file that will be sent for the session of the topic of discussion? Yeah. So we will send you a package of all the activities in the form of PDF file. My second question is that regarding the video coverage that someone will do to send it at the end of the session, if to say that someone cannot be able to do it, I have seen that in the guidelines that someone can write it as part of the report. So, but I have seen it will be done in Urdu language. Is there any option that someone can do it in English? Yeah, you can do it in English, no problem. See, we have proposed two languages, Urdu and English. Okay. Jazakallah. You can write in English. Jazakallah. So if you are not comfortable in recording your videos, go for the second option. That's article writing. Okay. What confused me is I have seen that it will be in Urdu where it has been written on the bracket. That is why I said it will be in English also. Okay. Jazakallah khairan ya Sheikh. Say Tuesday's interactive session will be on all the assignment based activities. There are 4 activities clubbed with our online programs.
So including online programs, you have 5 activities per week. So the online session, which is scheduled on Tuesday, will be based on these 5 activities. We'll discuss over these 5 activities. चलिए और कोई? अस्सलामुअलैकुम सर, केस स्टडी के ऊपर थोड़ा रोशनी डाले तो ठीक रहेगा। मतलब केस स्टडी वो जो तहकीकी सवाल वो हमें जमा करना और जमा करना, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डाल। बशीर साहब? जी सुना जी। हाँ, आपकी बारी आ गई। जी, तहकीक दरअसल केस स्टडी के अंदर 3 अहम चीजें, 3 अहम उमूर तवज्जो तलब है। एक तो ये कि जो आपको इक़्तिबास दिया जाएगा कुरान मजीद के आयात जो सैयद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका पर मुश्तमिल होगी, तो उसमें से वो जो इक़्तिबास जो दिया जाएगा आपको, तो उस पर आपको गौर करना है। पहले उसकी आप बेहतरीन मुताला कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मुताला करने के बाद तो गौर फिक्र कीजिए उस पैराग्राफ के ऊपर, और फिर इंशाल्लाह एक खुद ब खुद आपकी स्टडी होने के बाद खुद ब खुद अंदर आपके अंदरून से एक खुद सवाल जो है इंशाल्लाह डेवलप हो जाएगा। तो वो कोशिश की, जैसा कि गाइड बुक में ये एक मिसाल दी हुई है, इसके अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, कि वो जो चांद तारे वगैरह के है ना निकलता है डूबता है, तो उसके ऊपर वो गौर फिक्र करते हैं। तो उसमें से एक सवाल ऐसा बताया गया है कि भाई वो आपका अंदाज गौर फिक्र कैसे होगा, एक सवाल आप इसमें से डेवलप कर सकते हैं। या फिर जो तारे सूरज का डूबने का जो जिक्र किया है उसके बारे में क्यों किया है, तो वो उसमें से ये आपका क्वेश्चन होने के बाद फिर आपको उस पर मेहनत करते हुए उसकी तफसीली मालूमात को इकट्ठा करना है। फिर अब उसके अंदर सारी चीजें आ सकती है, जैसा यहाँ पे लिखा है कि साइंसी एतबार से भी होगा, साइंटिफिक आदात भी उसके अंदर आएंगे। मतलब आप जितनी तहकीक उस सवाल के जवाब के लिए लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो काफी बेहतरीन जवाब जो है उसका आप तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसा हम बताया गया है कि वो उस डेटा कलेक्शन के अंदर किताबों से मुताला करें, आप अफराद ख़ानदान से, असातिज़ा उलमा से डिस्कस करें, और फिर वीडियोस देखें, इंटरनेट वगैरह से मदद लेकर आप वो सवाल का जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये एक बार आप शुरुआत करने के बाद में उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आपको बहुत उसमें मज़ा भी आएगा और आप इसमें महारत हासिल करते चले जाएंगे इंशाल्लाह। जी, एक आखिरी सवाल लेंगे इंशाल्लाह, ओपन सेशन का वक्त खत्म होता जा रहा है। मैसेज में कोई छूटा है क्या सवाल? नहीं जनाब, वो एक सजेशन आया है कि इंडिया में नाइट के टाइम पे नेटवर्क के कनेक्शन स्लो रहते हैं, बैंडविड्थ स्लो रहता है, ऑनलाइन प्रोग्राम्स अगर रख रहे हैं तो उसका ख्याल करें बोल के बता रहे हैं। जी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोगों का ओपन सेशन इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आपके कोई